Hello everyone, welcome to EduCommerce. So in this series, we will continue with the 5 more questions from 16 to 20. In the previous videos, we have discussed the 15 question in different videos और आज हम auditing के 5 और questions complete करेंगे. So let's begin with the very first question. Who can check the minute books of a company? इसका पूरा ये होना चाहिए. सो मिनट बुक्स रिफर्स टू जब भी एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस या कंपनी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा जाता है वो मिनट बुक में लिखा जाता है. सो हु कैन चेक द मिनट बुक? सो मिनट बुक of a company can be checked any time by the shareholders of that company because they are the owners of the company, and if somehow they are not present in the company or in that annual general meeting, so ये minute book check करने से उनकी वो easily अपने सारे documentations अपने सारे validations को वो आगे predict कर सकते हैं. So shareholders are the people or the person who checks the minute book or can check the minute book of the company. और भी लोग होते हैं but इधर ऑप्शन में shareholders ही होगा. Then the next question is 17th. Working paper which contain a record of the audit work done are property of. जो भी ऑडिट वर्क डन करते हैं, जो भी करता है एक ऑडिटर, और वो जो वर्किंग नोट बनाता है, वर्किंग नोट हमेशा अपने रफ़ के लिए बनाया जाता है, अपने रिमेम्बरेंस के लिए बनाया जाता है. इन द सेम वे वी डू इन द अकाउंटेंसी. सो दीज आर द वर्किंग पेपर्स. सो ऑटोमेटिकली this is the property of the auditor. The answer will be the auditor. So working paper which contains the auditing record या audit work which is done is the property of an auditor. वो प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की नहीं होगी. डू रिमेंबर वर्किंग पेपर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑडिटर्स. Moving towards the next question, the auditor has to submit audit report. Very important question. Although audit report इसका बड़ा ऐसा लगता है हमें that we have to submit or the auditor have to submit to the board of directors of the company, but in the same way the answer lies in the shareholders. So the auditors has to submit their annual report to the shareholders of the company in the annual general meeting. Why I am saying repeatedly in the annual general meeting? Because this is the only platform where the shareholders, board of directors and other members of the company, whether internal or external, those who are eligible to sit in the annual general meeting, they can communicate with each other. So this is a platform. That is why the auditor have to submit the audit report to the shareholders of the company. Then the next question, a very basic and important question. Although in the examination बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत basic questions पूछे जाते हैं and we skips from our mind. So our 19th question is a systematic examination of books and records of a business is. Here the important words are books and records की यहाँ बात की जा रही है. यहाँ पे एंट्रीज़ की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एविडेंसेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस की बात की जा रही है. तो यदि हम किसी भी कंपनी के बुक्स और उसके रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिनेशन करते हैं और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसे ही हम ऑडिटिंग बोलते हैं. सो ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रूफ चेकिंग, इट शुड बी अंडरलाइंड दैट द प्रूफ चेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस to ascertain the accuracy of accounting record is called. So here the question itself gives the answer that the proof checking documentary evidence to ascertain the accuracy of accounting records. So here we are trying to analyze the proof checking documentary evidence. Those are the vouchers of the company through which each and every transactions
which are recorded in the books of account are analyzed or are compared. So the proof checking documentary evidence to ascertain the accuracy of accounting record is called vouching. उसको हम vouching कहते हैं. So I'll try to give some more questions regarding to the vouching in the next videos. So this is really very important definition of vouching. Hope you all liked it.